All right, so yeah, there was, okay, let me first show you what we want to do. Okay, so this is what we wanted to do, right? So what next? We wanted to have an EC2 instance. So after GitLab and all, whatever we have done after after you guys did this three assignments, right? Docker we did, CI we did, CD we did, CD we did not deploy on Beanstalk or EKS cluster. My next objective was that I'll show you this, but okay, let's wait. Let's come here. So what next is what I written here. EC2 instance we will create. So I thought of demonstrating you how to provision from AWS UI, how to provision it from Terraform. I told you some basics of SSH, etc. Then I told you something about Nginx, which is which I would thinking of explaining it today as well, because yesterday we had a very brief discussion on this, but we'll talk about it today. And then how we run and configure multiple application on the same server. And then I thought of explaining REST API basics. So this is what I thought I will explain today. Then once we do that, then we go a bit ahead, right? So अभी हम केवल एक my static site को deploy कर रहे थे जहाँ पे केवल index.html है. That's not the real application, is it? It's not. So we wanted हम एक API बनाएं और API को deploy करें. So before we deploy an API, you guys need to know what an API is. So I thought of explaining the basics here first, and then I created a small Flask API so that you know what API is and how it's being developed. You don't have to learn it. Okay, let me be clear. Whatever I'm telling you, you don't have to learn everything. अब पाइथन फ्लास्क सीखने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को. मुझे आता है पर आपको सीखने की जरूरत नहीं है. Okay, same goes with the next part. The next part, I have an application. I'll show you that application in a while. It's an appointment booking system so that we elevate. So this was sort of a new iteration उस tools का कि अभी तो आप केवल index.html बना रहे थे using Flask, but now you will have an application जहाँ पे एक front end है, उसके 3 backend APIs हैं, front end APIs को call करता है. तो ये पूरा system of 4 components, how they work together, and how you go and build the software using GitLab, and how will you do all the things required for them to perform a full-fledged continuous integration with all the quality checks of different kinds, and how you will go and deploy this. So I wanted to show you this, and after this, the idea was that after this, you will have a pretty good idea about अगर एक एप्लीकेशन है और आप उस किसी कंपनी में गए, वहाँ एक एप्लीकेशन आपको मिलती है, तो वो कैसे बिल्ड हो रही है और कैसे उसके क्वालिटी चेक्स हो रहे हैं और कैसे उसका सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हैं, right? This would have given you some idea. So my next objective was to show you this, okay? And then I was thinking of doing the same thing जो हमने यहाँ किया. Instead of deploying it to an EC2 instance, I was thinking the next thing to do would be to deploy this first in a Minikube. That is how I would have started introducing Kubernetes. And then we would have created a Helm chart. Helm chart is instruction set to deploy an application into Kubernetes cluster. And then we would have gone ahead with provisioning of the EKS. So this is not just one topic. This would have been divided into multiple topics. So this is exactly where we are heading. So the ultimate goal is कि हमारा ultimate objective, right? हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? We want to have an EKS cluster. AWS का इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विसेज का हमें क्लस्टर बनाना है, जिसको हम टेराफॉर्म से बनाएंगे. पहले हम मैनुअली बनाएंगे, फिर हम टेराफॉर्म से बनाएंगे, और उस टेराफॉर्म में हम एक हेल्म चार्ट बनाएंगे. हेल्म चार्ट नॉट टेराफॉर्म में, हेल्म चार्ट बनाएंगे फॉर आवर एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, और उस हेल्म चार्ट को हम इस EKS क्लस्टर पे सक्सेसफुली डिप्लॉय करेंगे यूजिंग आवर GitLab CI/CD pipeline. If you are able to do this part, if you're able to do this, you can immediately the next day you can start applying for jobs and you can say I have done this much, right? और उसके बाद the objective is कि हम लोग फिर new use cases करेंगे. There are different strategies available in Kubernetes कि आप किस तरह से deployments कर सकते हो. Kubernetes अपने आप में ही बहुत बड़ा है. तो I was thinking I will spend the whole October in Kubernetes. I will complete everything within September, because Kubernetes is such a big topic. It has many things. It's a components. I was thinking to cover all of this with some basics. First, so हम Minikube से start करेंगे, तो that means we are going to start with basics. I'll try to explain the components, how we use and how we deploy things, files, YAML files कैसी होती हैं उसकी वगैरह. We'll try to learn all that.
and we go from here and we try to deploy all that into the EKS cluster. So that is the ultimate objective we have. Okay, whatever plan I have presented you guys, whatever I've presented you, do you think it's okay? Do you think it's not going to serve your purpose, or you have some suggestions which you want me to include? It's good, it's bad. What are you feeling? I think so. It's good. Okay. Anyone else? Because I want to hear bad more than I want to hear good. Any concerns? It's good, sir. Good. Yeah. Okay. Okay. What about the people who are new? Arlene, what are your views? Are you scared? Overwhelmed? No, I think it should be good because as I see things are repeated, so I'm thinking I'll probably be able to catch up. Oh yes, one important point here. Everything will be repeated. So for example, आज मैंने Terraform बताया, right? We are going to use it a lot for many things. हम लोग इससे हो सकता है एक beanstalk भी trigger करें, फिर हम इससे EKS भी trigger करें. So all the Terraform things and everything are going to be repeated with more advanced features. Same is true with GitLab. So GitLab हमने अभी छोटा सा part किया, but we are going to explore it more. When we do this, then the more aspects of GitLab will come into light. Right, so all the tools we are going to repeat, they're going to be repeated. It's not like because my strategy is not tool based, right? Hamara strategy is breadth first, tool chain based, not tool based. हम tool chain सीख रहे हैं पहले, तो हम iteration wise iteration जाएंगे, and every iteration, every little thing we do, we'll go with the go through all the tools again with new use cases. So that's our approach. Okay, cool. Let's start. अब जाके तो हम class start कर पाए. Okay, fine. Um, don't take me wrong, all this which I think we spent 1 hour, almost 1 hour with, I think it was useful. Okay. But today we'll keep it light. I would like you guys to focus on whatever we have done so far. So मैं कुछ advanced चीजें नहीं बताऊंगा. I will just show you few of the things, let's say in terms of applications and why learning applications are important. Because वो ही आपको deploy करना है, right? Eventually, what is it which DevOps engineer do? DevOps engineer builds a software which he did not create, of course. उसने वो software नहीं बनाया है, but someone created it, right? So the DevOps engineer needs to understand what is it which someone has created, and how will I build and go ahead and deploy it. So you need to know some basics of how an application works. What is an application, right? That's the reason, if you remember, the very first session which we did long back was on microservices, right? We did, where it go? Here, right? Long back, this is what we discussed. I think almost the first sessions on what is a microservice architecture, because based on a microservice architecture, you will also go and design your pipelines, and your infrastructure all is adherent to the idea of microservices. So that's the reason you're always supposed to understand the architectural considerations of a software, as well as now today we'll talk about how these applications are actually created, what is the content of these applications, how they really work. Okay, now before I go ahead and talk about it, I would like to know from you, anyone know what is an API? Anyone here doesn't know what is an API? Let me put it this way, and explain me what it is. Can anyone do that? यस सर एपीआई क्या है बता सकते हैं हाँ बताओ. सर एपीआई इज लाइक अ गेटवे by which we can go on any application and fetch their data. Okay, like a gateway. Okay, fetch their data. Fine. Okay, it's not only that, but yeah, close enough. Anyone else wishes to try before I start? Okay, API के साथ ये 3-4 words use होते हैं. Get, put, post, delete. Anyone know what these are? Okay, so
Where Sir, to start? API is a Hmm? application programming interface. Yes, that's true. It's a full form of And APIs. Yes, yeah, good, good. and the get, post, put are the methods. Yes, that's true. Post, put, delete, they are the methods. Okay, good. Okay, let me introduce very quickly, show you a few things. API, let's say this is an API. API is like a black box, जहाँ पे आप उसको request भेजते हो. You send a request, and then API responds, right? So this is your request part. Okay, so let's say this is your request. Oh God. So this is your request, and this is your response. This is your response. Okay, so request and response based model होता है इसका. Okay, आप उसको बोलोगे मुझे कुछ चाहिए, तो वो आपको उसका रेस्पॉन्स देगी. वो कहाँ से ला रही है, दैट्स डिफरेंट मैटर, हम डिस्कस करेंगे. मोस्टली वो डेटाबेस से सिचुएशन ला रही होती है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, इट ब्रिंग्स इट बैक फ्रॉम द डेटाबेस. But this is how basically the model works. You request something and gives you a response. आज के जो modern APIs हैं, they are primarily REST API which does its communication on HTTP. So HTTP और TCP based आपका request होती है, और TCP based और reply भी उसी फॉर्म में आपको मिलता है, REST के बेसिस पे, सॉरी HTTP के बेसिस पे. HTTP क्या होता है? It's a protocol. HTTP has two parts, header and body. So आपका पूरा इंटरनेट इज वर्किंग विद HTTP. आप एक पेज को रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर उसको सुनता है, फिर एक नया पैकेट क्रिएट करता है सर्वर, HTTP पैकेट कहते हैं उसको. बॉडी के अंदर वो HTML डालता है, और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन वो डालता है वो आपको भेज देता है, आपके ब्राउजर पे आता है, ब्राउजर आपको दिखा देता है क्या बॉडी में है. वो HTML है तो रेंडर हो जाता है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के फॉर्म में दिखा देता है. ओके, that's how basically the whole HTTP TCP thing work. If you have no clue about it, I think you can just go and read an article. I will send it, and we can discuss it further also. If you think I should cover more basic, let me know. We'll talk about it. You can tell me now. We can talk about it as well. But HTTP TCP is very common. Your whole internet works on it. So API also works on the same pattern, but there is some rules here, right? Rules which have come from a specification called as RESTful. So एक RESTful नाम का specification होता है which says कि अगर आप जो भी API बनाओ, this is for developers. So developers को RESTful API specification अगर implement करना है तो उनको बोला जाता है कि आपको कुछ rules follow करने हैं. What are the rules? The rules are that you use HTTP verbs which are अरे यार इतना बड़ा कैसे हो गया है? I think I have to put that in a text. Can I put that in a text? Yes. So HTTP verbs. What are HTTP verbs? I can reduce the size. Oh, I don't know. Never mind. Get, put, post, or I should put it like this: get, post, put, delete. What are these? Can anyone tell me what are these? For reading, creating, editing and deleting तो मुझे बताने जरूरत नहीं है. For deleting. ठीक है? ओके, सो कोई भी एपीआई को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं इन चार मेथड्स में से यूज करूंगा कोई एक. अगर मुझे एपीआई से कुछ चाहिए तो मैं कहूंगा गेट. मुझे एपीआई में कुछ क्रिएट करना है तो मैं कहूंगा पोस्ट. मुझे एपीआई में कुछ एडिट करना है तो मैं कहूंगा पुट. और मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं कहूंगा डिलीट. ठीक है? Another good practice or best practice for API is every API के पास एक स्पेशलाइज यूनिट होती है, उसे कहते हैं एंटिटी. ओके, देखो मैं बेसिक बता रहा हूं, जितना समझ में आया अच्छा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं. ओके, बिकॉज दिस नॉट व्हाट DevOps engineer do, but if basics are clear then it helps in understanding the overall picture. एंटिटी क्या होती है? समझ लो एक एम्प्लॉय की एक एपीआई है. इट्स एन एम्प्लॉय एपीआई.
तो API का जो ऑब्जेक्टिव है, द पर्पस ऑफ API इज टू मैनेज द एंटिटी, दैट मीन्स मैनेज द एंटिटी विच इज द एम्प्लॉय, दैट इज कि अगर मुझे एक कंपनी की एक API है एम्प्लॉयज, अगर मैं कहूंगा गेट, अगर मैं उसको हिट करूंगा उस API को, कहूंगा लेट्स से इसका नाम है एम्प्लॉय API, I will go and hit this employee API, I will go and get the list of all the employees. If I get create new employee, I will say post new employee, so new employee will be created. I want to edit some employee information, maybe phone number or address, edit it. I want to delete the employee, I will say delete the employee. So हर API की एक entity होती है. Okay, fine. Any questions so far? Okay, I did not even explain anything much for reserving a question. Fine. I will show you example of an API, then I'll show you to create it also. Okay, एक example पहले दिखाता हूँ जो मैंने पहले बनाया था, which is the Flask API. Don't worry about the word Flask. Just see the code. Okay, the code is here written in Python, but the context is you will get maybe from here. Okay, so if you see, I have these methods written here: get, post, put, delete. And I have written some methods here. Okay, आपको ये methods नहीं लिखने हैं. So don't worry about the code here. Just see अंदर क्या है, just for the sake of seeing कि अंदर क्या है. Then I will show you how we run this. Okay. So मैंने यहाँ पर Python का एक Flask library होती है, which is used for creating API. I have used that, and this is the data. This data right now is inside the file. Usually ये database में होता है, but मैंने इसको यहीं लिखा हुआ है for the sake of simplicity. Database वाला भी दिखाऊंगा मैं. I have kept it here, and then I have created that जब इस API को कोई slash simply करेगा तो एक index page return करो, ऐसा मैंने उसको बोला है. जब इसको कोई slash books कॉल करेगा तो get करो and return all the books. I'm giving you a walk through of the code. Okay, जब कोई इसमें books करेगा और ID लिखेगा 1, तो जो book की ID होगी उसके बेस पे उस book को return करो. जब मैं कहूंगा post, if I say post, then then create a new entity. When I say a put, then modify the ID which I have sent. Delete the file. Delete the entity. Right? तो इसमें entity क्या है? What this API is doing? API की जो entity है वो है book. इस API का जो काम है वो है book को manage करना. New book creation, new book deletion, new book updation, and get all the books or get a single book. So entity here is book. So इस API का नाम actually होना चाहिए book API और books API. Fine. इसी तरह से दुनिया की जितनी भी APIs आप आज आने वाले दिनों में देखोगे वो सब इसी पैटर्न पे बनी होंगी. उसमें एक या दो या कई लोग मल्टीपल एंटिटीज रखते हैं, कई लोग सिंगल एंटिटीज रखते हैं. काम API का यही होता है कि किसी एंटिटी को मॉडिफाई, डिलीट, अपडेट या गेट करना है. That is the primary purpose of that API. Okay. Another example of an API, I can show you that. Okay, let me quickly show and run this first. So if I go and show you how this API works, मैं आ जाऊंगा and I will simply say Python 3 app.py. Okay, I have to run few more things. Let's not do that. Okay. But I have done something better. So आपको अब बोलोगे मुझे Python सीखना पड़ेगा, नहीं कहीं नहीं सीखना पड़ेगा. There is a Docker file here. I've created a Docker file, right? So this Docker file speaks everything. It says जो भी application है dockerize करो, image बनेगा, उसको आप run कर सकते हो. Let me run the Docker file. Let me build the Docker file. So I'll say Docker build -t 333-743 my Flask API. Fine. Then I will say maybe latest dot. Okay, this will build. My API is now built, and I will now then run this. So if I go ahead and run this, Docker run -port. Let's say if I'm running this on 5.8085 or 8086, I'm not sure if it's free, and then I will say 5000 because internally this is exposed at 5000.
and then I give it the path like this. Okay, so now it's running. If I want to see the running API, I'll go here and I'll say localhost 5000, and it doesn't work. No, because I have given 8086, and now my Flask API is running. And here, to make it useful, I can use something like this: get books1. So for example, if I say /books, I get the list of all the books. I say 1, I get the ID book detail of the first one. I say 3, there's no book of IDS 3, so error. I say 2, I get the book which is Samuel R. Delany. Okay. Now this is the API I wanted to deploy, right? So for this, I created another pipeline, बिकॉज अब तक आप लोगों ने केवल एक ही तरह की एपीआई डिप्लॉय की है, सॉरी एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, which is giving back index.html content, right? But we don't want it because now you want to do the API deployments. We are going one step further. So here I created this pipeline, my Flask API GitLab. It has exactly the same code with a Docker file, and inside of it, it's exactly same what you've done. Same तरीके से हम उसको build कर रहे हैं, और सेम तरीके से हम उसको SSH कर रहे हैं, SSH करके उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, exactly the same way. Okay, and this is an example of how to deploy an API and make it work, and that is exactly what I have done also. I was demonstrating this earlier. मैंने इसको deploy करा हुआ है already. I had stopped the server, so host is gone now. I will go and restart it maybe. But this is how basically you do. Now, I want you guys to do the same. So your assignment is something exactly what I'm telling you. You guys have to clone this project. So instead of cloning it, आप simply इसको डाउनलोड कर लो, अपनी रेपोजिटरी खुद की बनाओ, डाउनलोड द स्टेट, और मे बी जस्ट इंटरनेट पे जाके चेक करो, देन कॉपी app.py as it is. आपको राइट नहीं करना है. As I said, this you are not a developer, you're not training to become a developer, you just need to build this, right? So ये आपके लिए dummy API मैंने बनाई हुई है. Let's say I am the developer for you and I am giving you a task of creating a pipeline for this, and your job is just to see the source, get the source code, get the Docker file, right? This is the Docker file, get the Docker file, and then just create a pipeline for this and deploy this. That will be your first assignment. अब मुझे बताओ, how many of you are able to, after whatever I've told you, how many of you think there is a problem that you will not be able to deploy this? You didn't understand much. Is it doable task? Download app.py, download Docker file, simply build it. आपको पाइथन भी नहीं चाहिए, पाइथन कुछ भी नहीं चाहिए आपको आपके सिस्टम पे, एवरीथिंग इज ऑलरेडी हियर. तो मैंने एक अल्पाइन लेटेस्ट नाम का डॉकर फाइल एक्सप्लेन कर देता हूँ, अल्पाइन लेटेस्ट. उसके अंदर एपीके से मैंने अपडेट किया, एपीके को यूज करके मैंने पाइथन इंस्टॉल किया. ओके, पिप इज अ पाइथन पैकेज मैनेजर, वहां से मैंने पाइथन वगैरह सब डाउनलोड किया, एंड देन यहाँ से सब सेम है, सेम लॉजिक है. वर्क डायरेक्टरी बनाया, ऐप कॉपी किया सारे सोर्स कोड को वहां पर, एंड देन एक रिक्वायरमेंट, इसकी फाइल होती है requirement.txt, जहाँ पे उसकी डिपेंडेंसीज लिखी होती हैं, उसको यूज करके इट हैज ran it, and I'm just running the command python3 app.py, and it was supposed to run it. It was supposed to run the Python API. So far, so good. Yes. Okay, fine. So this will become sort of your first assignment. Now let me show you a bit advanced example of it, which I think I did demonstrate it before, but let me show it again. I have another project which I created, which is here, Doctor Everywhere Reference App. Okay, so this is an application, full application where you have 3 APIs and 1 front end. Okay, and this is the application which we are going to be using a lot across whole thing, because हम इसी application को पहले EC2 पे करेंगे, फिर maybe Beanstalk पे करेंगे, या फिर maybe Minikube पे करेंगे, और फिर इसी को हम basically
EKS पे करेंगे. Okay, so we are going to be use this as the guinea pig, as an application which we will play around with for our DevOps, learning our DevOps tool chain. ठीक है. How this works, let me quickly show that. And again, I'm saying this again, आपको नहीं सीखना है ये कैसे बनी है. Okay, आपको मतलब है केवल डॉकर फाइल से, because एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए डॉकर फाइल का होना जरूरी है, डॉकर फाइल समझ में आनी चाहिए और आपको टूल चेन समझ में आना चाहिए. बेस्ड ऑन दैट यू कैन बिल्ड any software without learning the nitty-gritties of that software. Okay, now if I go back here, I'll open the project, or I have already opened it. Okay, now this is the project. What do we have here? We have 3 APIs. Now this API is written in Spring Boot. How many of you know Spring Boot, or maybe have tried it? Okay, you don't have to learn Spring Boot basically. API के basics मैंने आपको बताया. API REST API can be created in multiple platforms. One is Flask, a Python. You can do this with Express.js. You can do this in Java using Spring Boot. There are many frameworks available for creating RESTful API. These are usually very famous among developers, but you guys are not getting trained for developers. You're going to learn DevOps. So all you need to worry about is Docker files and how to build the software. How the software is written, what the software does is none of your business. All you should be worried about is Docker files and how to build it. Fine. So here in this, I have 3 applications actually. You see one project. Here you see just one project, which is this one. Inside this, you actually have 3 projects. Appointments API, this is a RESTful API. Doctor API, another RESTful API, and patient API, which is another RESTful API. And then we have one front-end UI, Vue. Vue is a Vue.js framework, which I have used here. So React is another framework, which is a front-end framework. Vue is another one. You may have also heard of Angular, which is another single-page application framework out there, which is quite famous. I have used Vue here. You don't have to learn it. You just need to know where the front-end is, where the back-end is, right? Now for all 4 components, UI, front-end, back-end, 1, 2, 3 APIs and one front-end, 4 components I have here. I have 4 separate Docker files to build all 4 of them. Okay, let me show you where they are. For Vue UI component, I have a Docker file here, which looks like this. So here I'm using Node base image. Then I'm copying few things, package.json, copying the whole file there, installing something, run npm install, npm run build. And then I'm saying production stage, again using from. Can anyone explain me what kind of Docker image is this? Any clue? Because I have 2 from statements here. Usually you see something like this, right? Where you have one from and then end of it you run some command. So there is, but if you see this looks different, right? Here I have 2 from. We are building from image one. What? Multi-stage Docker file, something. Right. So this is called as multi-stage Docker file, right? In a production environment, you want your images to be lean. Lean means smaller size. उनका size थोड़ा smaller चाहते हो आप. Smaller size कब नहीं होता है? जब आप उस सॉफ्टवेयर की बिल्ड प्रोसेस के आर्टिफैक्ट्स भी उसी इमेज में रहने देते हो, तब प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा Vue.js का एप्लीकेशन को बिल्ड करना था, तो मुझे बिल्ड करने के लिए उसकी सारी डिपेंडेंसीज पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी. वो होता है npm install से. When I say npm install, जो मैं आपको लोकल पे दिखा सकता हूँ. ओके, इफ आई गो हियर, npm install, if I show you here, ये मेरा Vue.js है. जब whenever I run npm install, एक node module नाम का फोल्डर बन जाता है और उसके अंदर सारी लाइब्रेरी इकट्ठी हो जाती हैं जो मुझे चाहिए इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए नहीं, बिल्ड करने के लिए, राइट? इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन बनाने के लिए.
और ये बहुत बल्कि होता है. दिस इज लाइक इन MBs 200 300 500 800 MBs. अब अगर मैं अपनी इमेज को ऐसे ही रहने दूं, मैं ये चीज ना करूं और मैं यहाँ पे ऐसे रहने दूं और यहाँ पे CMD भी लिख दूं, तो ये इमेज मेरी बहुत बड़ी बनेगी. इट्स विल बी लाइक 800 MB और मोर मे बी. मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, बट इट विल बी बल्कि. द आइडिया ऑफ मल्टी स्टेज डॉकर फाइल इज कि आप पहले वॉट एवर यू नीड to deploy and run whatever it is, you do that first. Okay. After that, you create another stage. So आपके डॉकर फाइल में अब दो स्टेज हो गई, बिल्ड स्टेज हो गई, प्रोडक्शन स्टेज हो गई. फिर बिल्ड स्टेज को आपने नाम दिया हुआ है, फ्रॉम नोट दिस एज बिल्ड स्टेज, राइट. नाउ दिस बिल्ड स्टेज is what you will go and use in your production stage. So that is basically how layering or staging works. I think I will show you an exact example of it. अभी मैं बस आपको quickly बता रहा हूँ, but I think we will be doing some example. मैं आपको example करके दिखाऊंगा जहाँ पर we'll just do this. तो image कितनी size की बन रही है और अगर हम ये करेंगे तो image की size कैसे reduce हो रही है. That part we will see maybe in the next one. Okay, so this is a Docker file for Vue.js where I'm building it. Then if I go back to my appointments, Doctor API and Patient API, इनकी Docker file मैंने बाहर रखी हुई है. I have kept it outside. So appointments .docker file, Doctor API.docker file, and patient.api Docker file. These Docker files are also written something like this. Let me make it a bit bigger. Okay, so this is a Maven project, so I'm using Maven. ये भी मल्टी स्टेज ही है. देखो यहाँ पे मैंने Maven की डिपेंडेंसीज को डाउनलोड किया, सोर्स को कॉपी वगैरह किया, and then I ran Maven clean package, and then I am using this Maven toolchain cache, okay, as in my second stage, which is starting from here. Okay, so I'm copying it here and exposing it 8081 and then running the application. So my instructions for Docker file are here. Don't worry too much about it. I think हम लोग फिर से इसको we'll try to dissect this in the next sessions कि हम Docker file multi-stage कैसे लिखते हैं और क्या advantage होते हैं when we do this versus when we do multi-stage. But what I want from you is that you read through what is written, try to understand each line, what each line is doing, ask questions, and then we will and then understand कि वो क्या लिखा हुआ है वहां पर. ठीक है. Then try to build the application. So appointments API की अलग docker file है, patient API की अलग docker file है, और doctor API की अलग docker file है, right? Let me quickly run this. Let me show ये application चलती कैसे है. Okay. For this, I have added something called as Docker Compose. So I also wanted to introduce Docker Compose today, which we did not do before. A Docker Compose is a very plain vanilla specification of how an application should run. An application specification file होती है वो. Okay. अगर मुझे कोई application रन करनी है जिसके 4 APIs हैं और एक फ्रंट एंड है, तो मुझे 4 बार docker run कमांड चलाना पड़ेगा, right? I have to go and say docker run this, docker run Vue.js, docker run that, docker, ऐसा मैं 4 बार चलाना पड़ेगा. But there is an easier way of doing this. Instead of running 5-10 commands individually, you can define all those things into a single file called as Docker Compose file. So in Docker Compose file, the syntaxes are, I say services, मुझे क्या services run करनी है, version हमेशा constant रहता है like this, services. Then I want to say appointments. So मैंने लिखा appointments. मेरी पहली API कौन सी appointments? उस पहली API में मुझे कौन सा image run करना है? So I am saying I want to run this image, which is in the Docker IO 333743 appointments API latest. Then what environment I want to pass there? So in each Docker file, there is a field called as environments. I can pass Docker runtime environments from there. I'm saying I want to pass Spring Profile active local. Then I want to say कौन सा पोर्ट पर रन होगा, वो exactly same topic है. जॉब रन करते docker run -port 8081 exactly वही है. तो ये जो पूरे statement है, it is equivalent to saying docker run -p 8081 and this. So इस लाइन का मीनिंग ये है.
Okay, so this thing means this. Sir, hyphen IT नहीं आएगा क्या? Hyphen? IT. हाइफन IT आता है जब आपको इंटरेक्टिवली कुछ करना होता है. I can just run this and it will run. IT is not needed. IT is when I want to do some interaction there, so it will open something for me. Okay, so for example, if I do like this, it will start running my application. So it's running my application now. Okay, so it's now running my application, but I will close this because I don't want to run it from here. So instead of saying this, I will do something else. And same I've done for appointments, same I've done for doctor, same I've done for patient, and same I've done for front end. Okay, with different ports and everything and different versions and all. Now what I do to make it run, I will say Docker compose up. I will run Docker compose up. Acha. For few of you who is running this on their personal machine or wherever, who want to run this in your EC2 instance, Docker compose automatically install नहीं होता है कई बार. Okay, so if you running Docker compose और message आ रहा है Docker compose command not found, that means you have to install Docker compose. Docker compose के अलग से एक binary होती है, depending on which system you are. You just Google it, you'll get where the download link is, and you install Docker compose on your machine if you want to run this command. Okay, so Docker compose up. When I say Docker compose up will one by one will run all the run commands. So इसको चलाएगा, फिर वो docker को चलाएगा, फिर वो patient को चलाएगा, फिर वो मतलब parallelly करता है. It can do things parallelly. You can bind also कि मुझे पहले ये चलाना है, फिर ये चलाना है, फिर ये चलाना है, फिर ये चलाना है. So you can set that sequence also. But here I have no dependencies, so I am running all of them together. So all of my application is now up and running. How to check it? मेरा front end चल रहा है 8084 पे. So I go back here, I go and search localhost 8084. So this is my application which has functionalities with it, right? So it is an appointment system. So I have like this is very similar to Practo. Practo जो आपका application है, right? Where you have list of doctors, there you have patients, and then you can book appointments. So this is like creating an appointment between doctor and patient, right? So for that, I need to first know book all the appointments. When I go and click on get list of appointments, I get list of appointments. Now this list is coming from a database which is already hosted in the cloud. If I can show you that also very quickly, MongoDB Atlas. देखो आप लोग को नहीं बनाना, मैं बाबा इसलिए कह रहा हूँ, don't get overwhelmed with all the thing which I'm telling you. You guys don't have to do all these things. Only thing which you have to worry about is how will you go and deploy this. So आपका assignment is download the code application, put that into GitLab repository, and try to build this based on Docker file which is already there, and try to review the Docker file, try to make sense out of it, try to see what उसमें क्या है. Okay, I'll go to the cluster. This is where my database is placed. Okay, so collections, appointments, right? So in the appointments, I have this data already present. This is a document database, MongoDB Atlas Cloud, which I'm using here. Right, so all the data which you are currently seeing here is coming from that database. Okay, then I say get doctors, it will give me list of all the doctors. So I have these many doctors here. Okay, if I go and show you here list of doctors. Okay, Jamil, Dr. Monkey, Dr. whatever, Charles, Shubham, you know, all that is coming here. It's coming from there. And same goes true with get patients. And I can go and create new patients. I can go and create new doctors and all those things I can also do. Okay. All right. Now, what is it why I am telling you all this, right? So I'm telling you all this because imagine in your mind, you have joined a company. In your company, there's a developer. I am that developer. I have developed this application. I have my source codes placed here, right? Imagine I don't have a pipeline for this. What I want from you as a DevOps engineer, being a developer, I want from you is that I have given you this application. You guys have to build this and deploy this into a machine so that the end customer can see it, right? Right now, it's only running on my local machine. I want you, being a DevOps engineer, I want you guys to build this
and deploy this. What you will do that? Exactly same thing which I have taught you so far. That you will instantiate an EC2 instance using Terraform so that it becomes easy for you. You will run your Terraform command, create a EC2 instance, have your EC2 instance, create a pipeline. In the pipeline, run commands similar to this. I've already done that for you here. Docker login, build push, login, build push, and each thing I'm doing exactly the same thing. Appointments, build patient API, build doctor API, build front end, and then deploy. And with deploy, I'm deploying all these directly to my EC2 instance. This is what I want from you. This is the second assignment for you guys. Let's keep it light this week. So this week, you guys have to learn Terraform to instantiate your EC2 instance, initialize your EC2 instance, and then you have to deploy two applications there. One application is Flask API, and second application is this API. And you have the whole source code open for you. Don't try to copy paste, try to type it out. And then while you do that, make it running, basically, is what I desire from you. Okay, questions? Too daunting, too overwhelming, too easy? What? Silence? Anyone? Easy, difficult? नहीं होगा, होगा? सर थोड़ा ओवरलोड है, पर वो मतलब आपने जो बताया ना हो तो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ तो ओवरलोड तो मैं दूंगा ना, ओवरलोड के बिना कैसे सीखोगे, राइट? See, every class you guys feel overwhelmed. This is good. Why do you think that as a negative? Treat this as a good thing. Without this, without you feeling this, you will not learn. So if you're feeling difficulty, if you're feeling frustration, it's good. I want you to be frustrated. But your expectation from yourself and from me is to be managed. You need to understand that struggle is what I want to give you, and that struggle is going to help you. Don't have wrong expectations from you that कि मुझे फट से आ जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस बताया और मैंने किया और wow, done, and I will start jumping. That's not real, right? सर मैं थोड़ा बोला था कि अगर थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन कम होता तो थोड़ा बेटर नहीं है क्या? क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो आपकी जो थियरीज है ना, वो थियरी को भी पूरा एक्चुअली देखना पड़ता है और मतलब उसको थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, फिर ताकि फिर जो प्रैक्टिकल आपने जो दिखा है ना, तो उस पे उसको रन करना पड़ता है। तो वो एक्चुअली क्या है, वीडियो की लेंथ 2 से 2.5 घंटा हो जाती है और फिर आपका जो लेक्चर है वो 2.5 घंटे का हो जाता है, फिर उसको और देखना है, फिर 2.5 घंटा और, मतलब दिन भर में टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली। क्या मैं मेरा वर्किंग भी रहता है, तो मतलब कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा टाइमिंग में उसको एडजस्ट करूँ, कि बॉडी भी थक जाती है तो काम नहीं हो पाता है, तो थोड़ा लेक्चर ड्यूरेशन कम हो सकता है। See, lecture duration, if we reduce the lecture, you are saying कि हम 2 घंटे से कम करके 1 घंटे कर दें पर सैटरडे संडे? हाँ, या तो मतलब मेरा क्या सैटरडे भी वर्किंग होता है, मतलब अगर सपोज आप हाँ मतलब या तो फिर चाहिए तो संडे आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, या तो उसमें फिर क्या थोड़ा मतलब यूज थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि थोड़ा सैटरडे पे या थोड़ा मतलब 6 दिन के अंदर उसको थोड़ा कर सकते कवर अप। Okay. So Mohsin, I doubt I can do that because अगर हम reduce करेंगे time, so हमारा अक्टूबर क्रॉस हो जाएगा, and I have, as I told you, I have only till October, तो फिर हम complete नहीं कर पाएंगे हमारे टास्क को, right? So what I can do for you is जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, I will not take it record everything in a same length. मैं ट्राई करूंगा ब्रेक करने का उसको, टॉपिक वाइज टॉपिक I will break it so that I know that doesn't help much, but I think वो आगे बढ़ाने और पीछे बढ़ाने का I think logic maybe can help. नहीं, जब वो अगर आप ब्रेक करेंगे ना उसको, मतलब तो फिर वो लिंक उसमें टूट जाएगा, तो फिर वो जिसमें कुछ तो मैं नहीं ब्रेक करूंगा। अगर कुछ डाउट्स होते हैं हमारे, जैसे कुछ डाउट्स होते हैं ना, तो हम पूछेंगे, जैसे अभी जैसे कोई अभी जैसे विनय कुछ पूछते हैं कि इसमें कुछ इशू आ रहा है सर, ये आ रहा है, तो आप बताते हैं ना,
तो वो भी चीजें रहती है। तो अगर पूरा कंटिन्यू देखते तो फिर वो पता चलता है कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज पूछा था, तो ये एरर था, तो ये राइट, इसका सोल्यूशन था। ठीक है। सो मैं ब्रेक नहीं करूंगा, ठीक है। बट आई कैन ऑल्सो नॉट रिड्यूस द सेशन टाइम बिकॉज देन इट विल गो बियॉन्ड अक्टूबर। सो आई ओके ओके थिंक ओके, ठीक है सर। ओके 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 सर। So he I, can watch I, the yeah, go recorded ahead. session also. You can watch the Hello, recorded sir. session also. Yes, yes, go on. Yes. Yes, sir. वो recorded session देख सकता है और उसको जो भी डाउट रहेगा वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है सर आपको, वो Yes, भी इजी that, हो जाएगा। yes. So you're giving a suggestion or question, Snehal? Yes, sir. No, no, sir. I'm giving the suggestion, sir. सजेशन ना, हाँ हाँ, राइट राइट। सो ऑफ Yes. कोर्स वीडियो देखो, लेकिन वो मोहसिन का कंसर्न है कि वो इतना बड़ा वीडियो हो रहा है कि उसको वीडियो भी देखना पड़ रहा है, फिर करना भी पड़ रहा है, और टाइम उसके पास कम है। सी वाज कंसर्न दैट कैन वी रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम सेशन, बट आई थिंक हम अक्टूबर में खत्म नहीं कर पाएंगे। बट हमारे लेक्चर्स वीकली होते तो वी कांट रिड्यूस द टाइम सर। Yes, sir. हाँ, राइट राइट। सो या वी विल नॉट, इट्स ओके। ओके तो कोई नो इश्यूज, आई विल ट्राई। Okay. Yeah. Thank you, Mohsin, for raising it. Huh? Thanks. Okay. Fine. I see. I don't want to take more sessions. Sorry, more topics today. I was thinking मैं कुछ और बताऊं, but I don't want to. Hearing a lot of feedback of getting overwhelmed. So I believe you guys have plenty of things to do this weekend. Sorry, this week. राइट, टेराफॉर्म करना है, EC2 इंस्टेंस करना है, देन यू हैव गिटलैब से ये 2 एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी है। जैसे हमने माई स्टैटिक साइट किया आप लोगों ने, वैसे इन दोनों की भी CI/CD बनाओ। कोड इज रेडी, थोड़ा स्ट्रगल करो उस कोड के साथ, कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही उसको पोस्ट करो। तभी तो मैंने एक पेज बनाया कि आप लोग क्वेश्चन पूछो। आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, यही सोचते रहोगे कि ओवरवेलम हो रहा है, तो इट वोंट हेल्प यू एज वेल एज मी। सो यू गाइज ट्राई इट। स्टक हो गए, ऑफ कोर्स स्टक अच्छा है, मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब यू आर स्टक, and I don't want to help you also when you are stuck, because that means you are trying and you are struggling, and then you will learn. That's the only way to learn. मतलब और कोई तरीका ही नहीं है सीखने का. There's no other way other than struggling. So do that, and let me know whatever questions you have. I will wait. If you have any questions, we can talk about it. आज हमने ज़्यादा चीजें नहीं करी हैं, but I think we discussed lot of good things. Sir, I have one question regarding yesterday's lectures. Yeah, tell me. सर जो डॉकर फाइल हमने बनाई थी AWS इंस्टेंस की, कैन यू ओपन दैट? डॉकर फाइल बनाई थी हमने AWS, नो सॉरी, डॉकर नॉट सर, टेराफॉर्म, यूजिंग टेराफॉर्म वी आर लॉन्चिंग द AWS इंस्टेंस। यस, आई विल ओपन इट। हाँ, खोला मैंने। उसमें सर वो sudo sed वहां से एक्सप्लेन कर सकते हो आप? ओके, सो ये जो मैंने किया है, ये इसलिए यूजर डेटा यूज किया है। आई हैव यूज्ड दिस यूजर डेटा बिकॉज आई वांटेड कि मैं जब मेरा EC2 इंस्टेंस आए बने AWS में, तो वो उसमें सब कुछ पहले से इंस्टॉल हो, राइट। उसके लिए AWS में फीचर होता है यूजर डेटा का, जो आप मैनुअली, जब आप मैनुअली इंस्टेंस बनाते हो तो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो एट द बॉटम। वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ प्रोवाइड की है। व्हाट डू आई वांट? आई वांटेड कि मुझे उस यूजर डेटा, मुझे उस EC2 इंस्टेंस जब वो बने तो उसमें डॉकर पहले से इंस्टॉल्ड हो, उसमें nginx पहले से इंस्टॉल्ड हो, और उसमें nginx का कॉन्फ़िगरेशन पहले से हो, राइट। सो यहाँ तो पहले स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा, यम अपडेट। यम इज अ पैकेज मैनेजर फॉर MS Linux डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे अपडेट कर रहा हूँ। देन आई एम सेइंग इंस्टॉल डॉकर, दैट्स हाउ यू इंस्टॉल डॉकर। देन आई एम सेइंग स्टार्ट द डॉकर सर्विस, स्टार्ट हो गई। देन आई एम सेइंग यूजर मोड -ag docker EC2 user, this is how I am assigning EC2 user into docker group, ठीक। Then I'm saying check config docker on, so this is how I'm enabling my docker on boot. Then I'm saying install nginx, nginx install हो गया। And then after here till this point, यहाँ तक मैंने बहुत सारे इंस्टेंस लिखे हुए हैं। आप लोगों ने जो देखे होंगे इसमें केवल एक ही होगा, फ्लास्क वाला। बट यहाँ पे आई एम सेइंग समथिंग, राइट हियर आई एम सेइंग सेड। सेड इज अ लिनक्स कमांड फॉर एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। फॉर टेक्स्ट फाइल में अगर कुछ मुझे इंसर्ट करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, उसके लिए सेड और एक ऑक यूज होता है। वो दोनों मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन हियर इन दिस जो यूज कर सकते हैं, पर हियर आई एम यूजिंग सेड। इन सेड आई एम सेइंग -i इंसर्ट करो। पहले तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, आई एम डिलीटिंग फ्यू सर्टेन थिंग्स बेसिकली। आई एम टेकिंग अ बैकअप। पहले मैंने बैकअप ले लिया उस फाइल का। अभी मैंने आपको nginx फाइल दिखाई नहीं है, so it may not make much sense for now. So if you want to skip this for recent assignments, fine, but still I'll explain if you want to give it a try.
तो यहाँ पर मैंने एक फाइल होती है nginx.conf की फाइल होती है। अभी मेरा कोई इंस्टेंस ओपन नहीं है EC2 इंस्टेंस, अदरवाइज वुड हैव शोन यू। बट ये nginx conf फाइल जो है, इसके अंदर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, मुझे उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन इंसर्ट करनी है। मुझे कहना है कि जब जब सर्वर पे कोई 80 पे डाल के जब कोई /फ्लास्क लिखेगा, तो मुझे उस ट्रैफिक को राउट करना है यहाँ पर। उसके लिए मुझे nginx की एक फाइल nginx.conf फाइल को मॉडिफाई करना होता है। तो मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूं, कैसे मॉडिफाई करूं? मेरा सिस्टम तो अप हो रहा है अभी, तो मैंने वहां पे sed कमांड यूज किया है टू और मॉडिफाई दैट फाइल। ओके, समझ में आया? यस सर। सर विच मीन्स हम जब लॉन्च करेंगे EC2 इंस्टेंस तो हमें भी इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे कॉन्फ फाइल में nginx हाँ, के? जब आप nginx यूज करोगे, अभी तो आई थिंक जो मैंने असाइनमेंट आपको दिए हैं उसमें nginx आप यूज नहीं कर रहे हो, राइट? पर जब nginx यूज करोगे तो आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे उस फाइल में। ये तो कल मैं का आपको, असाइनमेंट बोला था ना सर आपने, ये करने को हमें या नहीं? हाँ करो करो, इफ यू कैन डू दिस, यू डू दैट। ओके। सी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे अपना EC2 इंस्टेंस बनेगा ना, वहां जाके इस फाइल के कंटेंट को देखना। पहले ये मत करना, पहले इसको हटा देना, पहले ऐसे टेराफॉर्म बिना इस लाइंस इन लाइंस को हटा देना, फिर देखना क्या हो रहा है। फिर लाइंस को डाल के देखना इस फाइल पे को पहले क्या थी जब नहीं डाला था और अब क्या हो गई ये डाला है। इस लाइन से क्या होगा, जो भी हैश नाम का फाइल होगा वो डिलीट हो, उस फाइल के अंदर जो भी हैश नाम से फाइल स्टार्ट हो रही होगी, हैश नाम से लाइन होगी, वो डिलीट हो जाएगी। सेट के सिंपल सिंटेक्स देखोगे पूरा लाइन क्लियर हो जाएगी, लाइन विल बी कंप्लीटली क्लियर क्या इसका इसका मीनिंग है। ओके, मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली आई नीड टू स्टार्ट इंस्टेंस बट मे टेक सम टाइम, ठीक है? बट गिव इट अ ट्राई, इट्स नॉट, आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। दिस सिंगल लाइन है यहाँ पर जो कि क्या कर रहा है उस फाइल में, nginx conf फाइल में इस लाइन को, ये 4 लाइन को इंसर्ट कर रहा है, प्रॉक्सी पास लोकेशन फ्लास्क। मीन्स सर हम प्रॉक्सी इसलिए यूज कर रहे हैं कि सेम सर्वर पर हम मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सके। हाँ, तो मुझे जब मैं उस सर्वर पे जाऊंगा, सो आई नीड टू से राइट कि जब मैं सर्वर का नाम, जैसे जो भी सर्वर का नाम है, 1 डॉट समथिंग समथिंग जो भी है, ठीक है, जब मैं कहूंगा फ्लास्क तो फ्लास्क की खोले, जब मैं कहूंगा डॉक्टर तो वो डॉक्टर की एपीआई खोले। अभी कैसे नहीं तो करूंगा ना, हाउ विल आई डू दैट? देयर डिफरेंट ओके पोर्ट्स, अभी मुझे पोर्ट से जाना पड़ता है। अभी मैं करूंगा तो करूंगा डॉट 8081 पे ये है, फिर 8082 पे ये है। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू जस्ट सिंपली से फ्रॉम हियर, from the URL rather than ports. ओके गॉट इट सर, आई विल ट्राई। Yeah, give it a try. Yes. Okay. Questions? More questions?